Today in this class we are going to discuss about the MS Excel. This is also called spreadsheet and is very important for every individual, whether you are a student, whether you are working in a company or anywhere else, right? So these classes are going to enhance your skills related to computer and different topics like MS Word, MS Excel and MS PowerPoint, Internet, etc. So what we are going to discuss in the Excel classes, basically this is the table of contents and this is our course, what we are going to cover in this class. First one is introduction to MS Excel feature interface cell, working with data, entering, editing data, rows and columns, selecting range and autofills, basic formulas like addition, subtraction, division and all those stuff, functions, sum, average, max, min, count if for higher studies. फॉर्मेटिंग द वर्कशीट, कैसे हम सेल फॉर्मेटिंग करेंगे, कलर चेंज करेंगे, फॉन्ट साइज करेंगे, डाटा मैनेजमेंट, सोर्टिंग, फिल्टरिंग, फ्रीजिंग पेन्स, इंसर्टिंग डाटा एटसेट्रा, चार्ट्स और ग्राफ्स, कैसे हम चार्ट को बनाएंगे, इंसर्ट करेंगे चार्ट्स को, वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे. तो मिनी प्रोजेक्ट भी करेंगे हम, क्रिएट अ मार्कशीट या हाउस होल्ड बजट एटसेट्रा वी आर गोइंग टू क्रिएट एंड रिविजन प्लस टेस्ट. After completing all these topics, you have to appear in the online test. Also, you have to appear in the online test on different topics. Right, we are going to discuss theory currently and later on we are going to discuss practically on computers. Also you have to appear in the online test as well as you have to complete few tasks related to MS Excel. So whenever you start your computer or whenever you open a MS Excel file, you will see this type of interface. To open a Excel file, this is a blank document, right? This is a blank document. Once you click on this file, like we have done in the MS Word file, clear? जैसा हमने MS Word फाइल में ओपन करते हैं, सेम प्रोसीजर यहाँ पर है, बस यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सेल शीट को हमने ओपन करना है. सही है, एक्सेल शीट को हमें ओपन करना है. So once you open the Excel file, you will see an interface like this. This is also called spreadsheet. यहाँ पर जो मैंने सेल लिखा हुआ है, ये देख रहे हो आप, ये स्क्वायर लाइंस का इंटरसेक्शन है, ये देखो दिख रहा है, ये इनका लाइंस का इंटरसेक्शन है. दिस इज कॉल्ड सेल, राइट. इस इंटरफेस में अगर आप देख रहे हो तो ये जो आप देख रहे हो, जो ए है, बी है, सी है, दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कॉलम्स. क्या कहते हैं इसको? वी कॉल इट कॉलम्स. तो कॉलम को हम नंबरिंग कैसे करते हैं? बाय यूजिंग अल्फाबेट्स ए बी सी. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, हम नंबरिंग कैसे कर रहे हैं कॉलम को? ए बी सी के द्वारा. ऐसे ये देख रहे हो, ये दीज आर रोज, ये हॉरिजॉन्टल है, 20 21 22 23 24, दीज आर कॉल्ड रोज, राइट. क्लियर है सबको? अब आते हैं आगे. हम क्या करते हैं कि भाई इन सेल के अंदर ही कुछ इनपुट करते हैं. लेटर से 12 13 15, ठीक है, ऐसे हमने सेल के अंदर इनपुट किया नंबर्स, राइट. अब इस स्प्रेडशीट का फायदा क्या है कि ये स्प्रेडशीट जो है हमें डाटा एनालिसिस करने में एडवांटेज करती है, राइट. सो जब हम डाटा एनालिसिस करते हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों की बता रहा हूं मैं, वहां पर ये यूज किया जाता है. इवन जो छोटी छोटी शॉप्स हैं वहां पर भी हम यूज कर सकते हैं. वो कैसे कि मान ले भाई कोई प्रोडक्ट है, उन्होंने यहाँ पे बना लिया प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी. अब उसकी कॉस्ट क्या है ना. या हम कहें प्रोडक्ट ए जो है वो उस शॉप में कितने यूनिट है, 30 यूनिट्स हैं अवेलेबल. एक प्रोडक्ट बी है, वो कितने यूनिट है, 50 यूनिट है. सही है. तो वो यहाँ से स्टॉक चेक कर सकता है कि मेरे पास कितना सामान बचा है. उसके लिए उसको रेगुलर अपडेट करना पड़ेगा. क्लियर है. तो ये छोटी से छोटी शॉप से लेके इवन स्कूल्स वगैरह में, क्लासेस वगैरह में भी ये यूटिलाइज हो सकता है. तुम लोगों की जो अटेंडेंस जाती है स्कूलों में से, वो एक्सेल के ऊपर ही मेंटेन करती होगी, राइट. अब आ जाते हैं कि इसके ऊपर हम और डिस्कस करेंगे. लाइक अगर मान ले मेरे को सेल को बोल्ड करना है, जैसे सेम टू बी दबा दिया, आई दबा दिया, है ना. वी कैन यूज यू अंडरलाइन के लिए, जैसे हम करते हैं. क्लियर है सबको? नाउ दिस इज एन एग्जांपल वेयर वी आर यूजिंग सम फॉर्मूला ऑफ सम फंक्शन. एक तरीका ये है सम करने का. फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो अपने को 23 प्लस 41 करना है, सिर्फ 2 का करना है. तो हम सिंपली देख कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू जरूर लगाना है, इज इक्वल टू 23 प्लस 41 एक ही सेल में. तो ये आपको रिजल्ट दे देगा. एक तरीका ये हो गया.
अब मान लेते हैं कि भाई तुम्हारे को करना है इतने सारे नंबर्स को ऐड करना है यहां से यहां तक, तो ये तो बहुत सारे होगे, तुम प्लस प्लस कब तक करते रहोगे, है ना। सो देयर इज अ फंक्शन फॉर दैट। फंक्शन क्या हुआ, देख जैसे मैंने इज इक्वल टू सम लिखा, तो सम लिखते ही इससे रिलेटेड इतने सारे फंक्शन आ गए हैं, बट वी आर डिस्कसिंग द बेसिक फंक्शन विच इज सम। सम किया हमने, जैसे हम सम लिखेंगे इक्वल टू के बाद वी हैव टू यूज व्हाट, सम के बाद हमें लगानी है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट जैसे लगाएंगे वो हमसे पूछेगा कि व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज फॉर दैट। तो रेंज के लिए हम ये पूरा का पूरा इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो जैसे हम सिलेक्ट करेंगे तो हमें इसको ब्रैकेट को बंद करना होगा, सही है। तो जैसे हमने ब्रैकेट क्लोज किया और वी हैव टू प्रेस व्हाट, एंटर, वी हैव टू प्रेस एंटर। तो जैसे एंटर मारेंगे तो वो इस पर्टिकुलर सेल में इन सब का सम हमें दे देगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये देख लो जरा ध्यान से। अब दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन एक्सेल, राइट। एक्सेल में हमारे पास क्या एडवांटेज होता है कि हम इसका सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज वगैरह हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट, सम वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम प्रोडक्ट का ये एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हें 23 इंटू 41 करना है, राइट, 23 इंटू 41 करना है। तो सिंपल, या तो प्रोडक्ट का यूज करें। प्रोडक्ट का यूज करने के लिए हमें क्या देगा, एक रेंज जब हमें करना होता है ना बड़ा, अगर उसको प्रोडक्ट करना है तो हमें एक बड़ी रेंज को सिलेक्ट करना होगा, राइट, वी हैव टू सिलेक्ट अ रेंज। लेकिन अगर हमें सिर्फ 2 सेल का ही प्रोडक्ट करना है, लेट अस से हमें 23 और 41 करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू डालेंगे, सेम। इस सेल को हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं, वो पूछ लेगा, या 23 डाल दो और स्टार लगाओगे, क्या लगाओगे, स्टार, और इंटू 41, तो ये इक्वल टू तुम्हें दे देगा जो इसका मल्टीप्लीकेशन होगा। वेरी सिंपल, क्लियर है सबको। और दूसरा तरीका क्या हुआ, जब रेंज पूछना हो, यानी कि जब तुम बहुत सारे नंबर्स को क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, राइट, तो उस केस में हम क्या करेंगे, वही प्रोडक्ट लगाया, स्मॉल ब्रैकेट आप डालोगे यहाँ पर, और इन दोनों को रेंज को सिलेक्ट कर लोगे, फिर क्लोज कर दोगे, एंटर डालोगे, वो पूरे के पूरे रेंज को सिलेक्ट करके इट विल शो यू द रिजल्ट, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर रेंज। क्लियर एवरीवन। ये क्या है, डिवीजन है, ठीक है। नाउ दिस इज एन एग्जांपल, वी आर डूइंग डिवीजन ऑफ दिस सेल। 23 को डिवाइड करना है 41 से, वी आर डिवाइडिंग 23 बाय 41। तो क्या करना है, इक्वल टू डाला, इक्वल टू के बाद सिलेक्ट किया किसको, C2। C2 क्या है, ये देखो पोजीशन C2 है ना, C2 23 डिवाइडेड बाय D2 दैट इज 41, राइट। तो इसको डिवाइड किया हमने, तो इट इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट। आप इसे एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट दे देगा आपको, डिवाइड। क्लियर हो गया। डिवीजन का भी ऐसे ही सिंपल। ये क्या है, परसेंटेज, इसको देख लो बेटा, परसेंटेज मैंने तुम्हें बताया भी था निकालना, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला परसेंटेज का, बता भाई क्या होता है। अगर किसी का नंबर 300 आता है तो 300 बाई 500 इंटू 100, मतलब 500 में से अगर 300 आ रहा है तो, है ना। तो परसेंटेज क्या हुआ कि मान लो आपके पास, एक एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपये हैं, 100, यू हैव 100 रुपीज, राइट, और आपने उसमें से 80 रुपीज यू हैव स्पेंड, आपने 80 रुपीज स्पेंड कर दिए, तो आपने कितने परसेंटेज का अमाउंट स्पेंड कर दिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अमाउंट यू हैव स्पेंड, राइट। सो यू कैन डू 80 अपॉन 100 इंटू 100, राइट। तो ये कट गया इससे, तो दिस इज लिटरली व्हाट, 80%। तो 80% ऑफ द अमाउंट यू हैव स्पेंड, राइट। तो ये हो गया परसेंटेज निकाला। अब यहाँ पे देखो ध्यान से भाई, वी आर फाइंडिंग द परसेंटेज हेयर। तो ये सब एक्सरसाइज आपको करनी है क्लासरूम में भी। 23 41 का कितना परसेंटेज है, सो 23 डिवाइडेड बाय, हम क्या कर रहे हैं, 23 डिवाइडेड बाय 41 इंटू 100, ठीक है। अब अगर तुमने डायरेक्टली लिख दिया तो ये गलत इंटरप्रेट कर लेगा। इसका एक तरीका है लिखने का, ध्यान से देखो। आपने इसको क्या समझाना है कि भाई इक्वल टू डलेगा, ब्रैकेट डालो, पहले आपने क्या ऑपरेशन करना है, पहले आपने करना है 23, यू हैव टू राइट 23 अपॉन 41, राइट, ब्रैकेट क्लोज किया। इससे इसको समझ में आ जाएगा कि मेरे को इसको करना है डिवाइड, और उसके बाद स्टार डालोगे इंटू 100। क्लियर है। तो वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा कि यू आर आस्किंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज हियर। क्या ढूंढना है, परसेंटेज।
So we are finding the percentage in this manner, right? Equal to C2 divided by D2 star 100. So it is going to give you the percentage of that particular numbers. Clear everyone? You have a table, right? You have create a table, column 1, column 2 वगैरह वगैरह, right? अब तुम्हें क्या करना है, इसको बॉर्डर करना है अलग अलग तरीके से. अब वो बॉर्डर करने का तरीका क्या है कि पहले यू हैव टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर रेंज कि जिसको बॉर्डर करना है. ये जरूरी नहीं है कि आपने पूरी शीट को बॉर्डर कर देना है, सही है. आपको यू हैव टू सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर एरिया ओनली. उसके बाद इट इज गोइंग, यहां पर आप क्लिक करेंगे बॉर्डर के लिए और ये आपको ऑप्शंस देगा कि किस टाइप का बॉर्डर आपको लगाना है. यहां पर बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर और ये क्या है, थिक आउटसाइड बॉर्डर. पूरे के पूरे बॉर्डर जो बाहर का लाइंस है उसको ये थिक कर देगा. क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, मान ले इसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट है तो ये सिर्फ ऐसे करेगा. कौन से वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, थिक आउटसाइड बॉर्डर का. क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो थिक आउटसाइड बॉर्डर. अगर आपको सारे एलिमेंट्स को, सेल्स को बॉर्डर करना है तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऑल बॉर्डर्स आप क्लिक कर दोगे. क्लियर है, ऑल बॉर्डर्स आप क्लिक कर दोगे तो आपको मिल जाएगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज फंक्शंस, अबाउट ऑल दीज properties in Excel, how to use if function, how to add, subtract and making average. Also we are going to learn how to do data sorting and filtering and how to make chart and visualization. So here we have the ready-made data in which I have mentioned the name of few students, also the subject like mathematics, science and English, and their scores, how much score each student got in their exam. Clear everyone? So first of all, what we are going to do, we are going to make a proper formatting of this. That means we are going to do centrally aligned all these things. Clear है? समझ में आ रहा तुम लोग क्या कह रहा हूँ मैं? है, हम क्या करेंगे यहाँ पर इस डाटा में सेंट्रली अलाइन करेंगे इन सब चीज़ों को, है ना. अभी सेंट्रली अलाइन नहीं है, लेफ्ट अलाइन है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट ऑल दिस एंड प्रेस दिस टैब विच स्टेट सेंटर योर कंटेंट. वी आर गोइंग टू सेंट्रलाइज अलाइन, राइट. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस एंड मेक अ प्रॉपर बॉर्डरिंग ऑफ दिस बाय यूजिंग दिस टैब, by clicking this all borders. So here we can see a beautiful Excel sheet, or we can see a beautiful border, right. And now as we know that name, math, science, English are the heading of the columns, so we have to make it bold, and also we can increase the font size of all this, right. First we are going to make it bold by using Ctrl plus B, and also we can make it like size 14, right. Now it is more clear to everyone. First step, what we are going to do now, we are adding all the marks. That means we need to find how many marks each student got. That means the sum of all these marks. So here we can make another heading by the name of total marks. Clear everyone? Now what we are going to do, we are going to add all these marks here. So first we use equal sign, then after that select this one first, plus this science marks, plus then English marks, then we can press enter, right. So here we are getting 253 marks, which is the sum of all these marks here. Simply we can drag this so that the formula which we have applied on this particular cell will be copied to other cells as well, simply, right. Now if we leave it, then we can see that it has added the respective marks of each student. That is, Kabir got total 210 marks, Arjun got 150 marks. Clear everyone? Also we can make a proper bordering of this by using the same method what we have done before, right. Now it looks good. Now we are going to calculate the average marks of this particular column. That means
what is the average marks of all the students in mathematics? So by using average function, as we have discussed, is equal to then AVERAG, right? Now we have to use what? Small bracket. Now we have to give the range. Obviously we are selecting all this, and again we have to close this bracket by putting small bracket. Now we have to press enter here. This is the 75. So 75 is what? 75 is basically the average of all marks, and we can also calculate this whether this answer is correct or not by using the formula. The formula is what? Formula is sum of all these observations divided by number of observations, and we have total number of observation is what? These are the total number of students, which are 11 in number. So if we sum all these marks, and we can check it here, we are getting 825 here, right? So equal to 825 divided by 11, we are getting 75. So that means your answer is correct. Now similarly we can find the average of science marks as well, right? Equal to AVERAGE, average, small bracket start. Now we have to select by pressing shift as well as the upper arrow key. Now we have to close the small bracket, and this is showing the average marks, which is 76.181, right? We can also format this particular number, as we can see that there are lot of numbers after decimal, है ना? डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर यहाँ पर ये दिखा रहा है. तो what we can do, we can simply reduce the decimal number. Here it is showing increase the decimal, here it is showing decrease the decimal. So we can press this, see it is reducing the decimal numbers, right? So we can use only 2 place of decimal here, right? So our answer is 76.18. Similarly we can find the average of English marks as well. AVERAGE. Now select this again. So this is our average. Now again we are getting a lot of number after decimal. Decimal के बाद बहुत सारे number हमें मिल रहे हैं. So we can reduce it again, right? So 77.8. Similarly we can find the average of total marks. We can also find the average of total marks. कि total marks का क्या average है भाई? ये देखो 229 is the average of total marks here. So I think function of average is clear now. Highest marks in each subject. ठीक है, अब हम चेक करेंगे भाई हाईएस्ट मार्क कितने आए इस सब्जेक्ट में. देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कहाँ पे कैलकुलेट करें, रुको यहीं पे कर लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम बना लेते हैं. वी आर चेकिंग नाउ द हाईएस्ट मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट by using max function. So what we'll do, we can write equal to max, that is max, right? So we are finding the max marks in this particular column, कि maximum marks कितने आए हैं इस column के अंदर, right? If you press enter then it is showing the 95. तो 95 marks जो है वो क्या है, maximum है. देखो ऐसे दिख रहा है. We can see that 95 marks is the maximum here, obviously, right? Similarly we can find the maximum marks using max function here. Max (92) marks is the maximum marks in this particular column. Similarly we can find the max marks here. Very simple, right? 96. So 96 marks is the maximum marks in this particular column. I think max function is also clear now. Now we can also find the minimum marks in this column by using minimum function. Minimum marks in each subject. So we can use min function for minimum. Now select this column. We can easily find the minimum value in this particular column. So 45 is the minimum marks in this particular column. Very simple. Similarly we can find this.
now we can find this minimum marks, right? So by using minimum function we can find the minimum value in any particular column. Also we have discussed the max function here. दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। अब देखो इफ वाले फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। हम क्या चाह रहे हैं कि मान ले भाई एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आते हैं 30 से या हम कहते हैं 40 से कम आते हैं, तो वहाँ पे वो टाइप करेगा एक कॉलम में पास, फेल है, और 40 से ज़्यादा आएंगे तो वो पास है, सही है। या हम कहते हैं कि भाई एक स्टूडेंट है जिसके आपने लिखना है कि अगर 60 से कम आते हैं मार्क्स तो हम लिखेंगे थर्ड डिवीज़न, है ना, और 60 से ज़्यादा आते हैं तो हम लिख देंगे फर्स्ट डिवीज़न। क्लियर है? तो वो हम कैसे लिखेंगे? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इफ फंक्शन। इफ फंक्शन, सो हेयर वी वांट टू चेक द डिवीजन ऑफ स्टूडेंट्स। दैट मीन्स in mathematics what is the division of this student, or we can say we can use the if function on this total marks. Let us say if a student got more than 200 marks then he got the first division, and if he got less than 200 marks then we can say write third division. Clear everyone? Now we are using the if function. If, then bracket start, the logical test is what? If this number is greater than 200 then use comma first, then we have to give the input in. Now we have to write our result, what we require basically. If this condition is true then we have to write this way, pass, okay, then comma. If this condition is not fulfilled then what we have to write? We have to write fail. Now we are going to press enter here. Let's check pass. Okay, why it is showing pass? Because this number is more than 200. So let's drag this so that the formula which we have applied in this particular cell is going to get copied on all the cells. See how many students are failed. This one is failed, right? This one is failed. So there are two students who got failed. Why? Because they are getting marks less than 200. Clear है सबको everyone? 200 से कम नंबर आए हैं तो इसमें क्या हो गया? फेल हो गया वो हमारी कंडीशन के हिसाब से। समझ में आ रहा है? ये तुम्हें भी करना होगा, ध्यान से समझ लो। ठीक है? Now we are going to use the sort function here. We are sorting the function on the basis of this total marks. That means the student who got the maximum marks, the highest marks, will be shown at first place and the data will be shown in the descending order. That means it is going to show us the data in the reducing form. Okay everyone? We press the data, right? Now we are going to press sort function here. First we need to select the entire data. After that we have to press the sort function so that entire data will be in its range. Now it is asking us sort by what? Sort by what? Sort by let us say total marks. Sort by total marks. Now it is asking us order smallest to largest. No, we are requiring what? Largest to smallest. Now if you press OK, let's see what is the result here. See, right, it has taken the last row as well. That is why it is showing some error. That is not an issue because we have selected the last row as well, right? Now we can see that all the failures, that means two students who got failed, are showing at the last position. The first one is who is securing the highest marks, 281, then 274, then 264, etc. Clear everyone? Clear हो गया भाई sorting? आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, असेंडिंग में भी कर सकते हो। क्लियर?
इसको डिलीट कर देते हैं, फालतू का। सही है, अभी क्लियर हो गया। नाउ वी आर sorting this data alphabetically. That means the student who has the name starting with A will come first. After that, a student with name B will come second, and so on. Right? So let's select the entire data first, then press sort. Then we'll use what? Name function. It is asking Z to A, no, A to Z. Now if you press OK, then we can see that the student who is having the name with A, first, second, third, right? After that B is not there, then D is there, then E, F, G, H not there, like that, right? Everyone clear? Now what is the next one? Filter students who scored above 90 in any subject, right? Now we understand the function filter. For that we select the first row and use filter here, right? Now what we'll do, we will highlight or we will show the student who got 95 marks here in mathematics. So let's select that only. First we have to deselect all, then we are selecting only the student who got 95 marks. Okay, now we can see that there is only one student, right, who got 95 marks. Clear everyone? Now we are learning how to make chart by using this particular data. That is very important. First we should remove this filter. Now let us say we have to make a chart, a bar graph of student name with their marks in the respective subjects. That means how much Anya got in mathematics, science and English. Everyone correct? So what we'll do here, we will select this particular row till 90 marks. After that we should go to the insert tab and select this one because it is showing bar graphs. Here 2D bar graphs are there. Now we can select this. See, so it is showing us a bar graph that Anya has scored this much of numbers. Now it is not showing us the name of the subject. So what we are going to do, basically, first delete this. Now select the name of the student with the subject name. Again we should go to the insert, then bar graph, this, right? Now we can see how beautiful it has shown, like name of the student is also there, how much score she got in English and science and then maths. Everyone clear? So this is how we can make a bar graph. Now we can also understand how to make a pie chart, right? Similar way, let's select the name of the student, right, with the subject. Now go to the insert tab. Now if you can see this, insert pie, right, pie chart here. Now we can use simple pie chart, see, right? So this is how it is showing a pie chart. A pie chart is basically a circle which is divided into 360 degree, right? So how much mark a student got, the Excel calculated on the basis of the degrees only. It is going to calculate this on the basis of the marks it got. Like for 90 marks, for 90 marks it is showing the gray part. Gray part is maximum because she got maximum marks in English. That means this particular part is showing what, 90 marks in English. Similarly science, orange part is science and blue part is of math, because in math she got less marks. Clear everyone? This is how we can make a pie chart.